नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते, उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते। बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन हिमाचल अलोन, दोज हु वर बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 22 बट बिफोर अक्टूबर 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the epic card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the digital, the website links to where they can educate themselves about the election process. We call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूंगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे, and the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. वो दे दो notification to dates दे दो. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November, and date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. Neeraj, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. नीरज. हेलो जी सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से. जी, मेरा सवाल तो एक ही है, लेकिन उससे जुड़े कई क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे. क्या गुजरात, पहला तो यह कि गुजरात चुनाव की घोषणा अपने साथ में करने का फैसला क्यों लिया, साथ में न करने का फैसला क्यों लिया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर के बाद होगी? क्योंकि गुजरात के विधानसभा की अवधि में वक्त अभी काफी है, क्योंकि पिछली बार 10 दिनों के फासले पे दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई थी. और तीसरा सवाल यह है, दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी. अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के. तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं.